Hi, Jimmy. Can we talk? Can you introduce yourself? Last time also you were there in the call, but you didn't speak. Can you unmute yourself? At least I should know you, right? Hello, are you there, Shivi? Hello, everybody. Good morning, good evening, and from wherever you are listening to this or watching this video or watching me live, I welcome you all. And today I will share with you one dream framework for our uniqueness. We all are unique by some means or other because of our experience, our birth, and our life story, right? Each one is very different from the other. There cannot be a copy of ourselves. So I have created a framework on which this is a framework, right? And let us start with this because sometimes that is what lately I have realized
that we hold ourselves from dreaming big, right? So here, what I'll do is I'll give you a open platform to write down your uniqueness. What is your mm, dream right now? Will that help? Your dream is very different from anybody else, and your own dreams at another point of time will be different too. So let me start this screen sharing and let me take you through. So building your uniqueness is yes, sir. Manu sir, welcome to the show. Thank you, Sangeeta. You just got in from somewhere. Yeah, thank you. You can switch on your video also, sir, so that we can speak. Haji. Yes, I just switched it on. Wait a minute. Yeah, namaskar, sir. Namaskar ji, how are you? I'm good, sir. How are you, sir? All very nice. Haji. Tell me about yourself, sir. So, as you may have seen on the profile, I am a veteran and now I do a lot of consulting work. Okay. Currently, I am in Cincinnati in the US with my children. Oh, So, so that's the what reason time I is said it? Is it morning? it's about, I think, 12 o'clock in the afternoon, just Okay. 3 minutes past 12. So back home, it must be about 10:30 at night or 9:30. 9:30, sir. It must be 9:30. Yes, sir. So how are the rains affecting you? You're in Mumbai? No, I'm at Delhi. Rains are Okay. horrible, sir. We are due to have one event at Chandigarh, and all the roads are waterlogged, and even train tracks. So all trains cancelled. So nobody could reach to the events venue, so we have cancelled that. And it is, nobody is accustomed to so much of rain in Chandigarh, I think. So, I think yeah. all over Delhi also. I mean, it's pathetic in the sense that, we can't blame the environment, the government, Yes, but I think yes, we need to yes, improve the infrastructure. That's the message. yes, yes. So nobody previously had this much of rain. So the infrastructure also were according to that. Now suddenly Haji. the climate change has happened. अब तो आपको बनाना ही पड़ेगा ना. So how can you help? Haji. True, तो true, true. क्लाइमेट चेंज के लिए भी हम सभी जिम्मेदार हैं. एंड वी हैव टू वेक अप सूनर और लेटर. लेटर का तो True. कोई चांस ही नहीं है. इट इज ओनली 10 years हमको दिया है थ्रेशोल्ड पार करने के लिए. 1.5 डिग्री जो हाइक होने वाला है टेम्परेचर में. तो True, या तो true. करो, अभी से करो. जैसे आप हर एक रोज देखते होंगे कि कार्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं. सभी को अपना इंडिपेंडेंस फ्रीडम पसंद है. So even if one person is going, it is a huge car, no? Status symbol बन गया. So how much carbon dioxide you are releasing to the atmosphere? वो तो किसी को होश ही नहीं है. पता नहीं हम इतनी बेहोशी में क्यों हैं. So anyways, तो वही तो चल रहा है सर. तो कितने दिन तक आप कार चला पाओगे वो देखो. See, what we have to do is we have to probably make our cities more friendly to the walkers. I mean, walking today is impossible in Delhi. I mean, they create footpaths. Footpaths are broken or they are taken over by street hawkers. Street hawkers are there because they give a bribe to the police. The police have to demand that bribe because they have to feed the system. And the system demands it because they have to buy their MLAs and MPs. And therefore, this circle is complete in this, circle, which I think needs to be hemmed in. And as I speak to you, we just walked around for about 2.5 hours in Cincinnati. And you see that the city council has made sure there are beautiful flowers all over the place. Landscaping has been done. There's not a speck of dust on the footpaths.
and there's not any leaf, everything is clean. Of course, there are some people who are irresponsible, but that would hardly be 0.005%. Yes. Overall, people are responsible and, disposing of things properly into the dustbins and other things, and maintaining the local orders which are there, and nobody's watching for such issues. So unless as we as citizens really wake up to the idea, I don't think it's going to change. And then when you see the local rivers, they're absolutely clean. They made beautiful picnic spots, which is free of cost, with proper restrooms, facilities for playing games, doing water sports, whatever. I mean, nobody's charging you anything for it. I mean, and that is what we were discussing within the family. Had it been in India, you would have had these hawkers selling you, bhel puri, mungfali, chai, coffee, soft drink, water, and then the litter across the entire area would have been phenomenally high. But here, it's all self-governed and everybody sort of maintained whatever is to be done. Then like at 9:30, the sun sets here at about 9:30 in the evening. Okay. So like automatically 9:30, you're not supposed to be in that particular area. So people were leaving automatically. The cops only came to see if you've actually vacated or not. But nobody's threatening you that why are you here? I mean, if you're here, you have to now pay me a bribe. Not that way. So I think these are a few things that will probably take some time to learn. Livelihood का सवाल है ना सर. Like हाँ जी. nobody is helping them on their livelihood ना. तो अपने खुद को अपना काम करना पड़ेगा. But I'm talking about हाँ आपने civic sense के बारे में बताया. Like say it has to be everybody's responsibility to think about holistically. It cannot be True. just one dimensional thing. I spoke about climate change. You spoke about civic sense. Everything is related at some point or other. वो holistic True. वाला जो picture है, somebody has to keep in mind and उसके अनुसार आपको बनाना पड़ेगा. Now we are chairman of G20. Now उसमें तो बहुत सारे action point होने हैं. But that is what I say. What is the starting point? Right. So, कहाँ से शुरू करें? Like I think the starting point is very simple. I mean, it's not very complex in the sense that I often quote this to many people is that what you were taught in your kindergarten is what you have to remember. Okay. And if you can follow that, you don't need any dharam gurus or any lectures to be given. So you have to go back to the basics. Yes, yes. But unfortunately, our society in India is well divided into smaller compartments. Yes. And it helps the political parties to, and it helps the political parties to get the votes. So that is I think the first point is that you have to start thinking as Indians, and then you have to start thinking about your country and your environment. If that can happen, then everything else will follow. Like somebody very correctly put it on social media. It said that you don't have to clean the rivers, just don't dirty them. The river will clean itself. You don't have to grow forests. Don't cut the trees. The forest will grow. Yes. Yes. Don't pollute the atmosphere will clean up. I mean, if you take your mind back to COVID, did we not have blue skies? Of course, we had blue skies in Delhi. And you had famous photographs coming that from Patna, you could see Mount Everest and you could see the Dauladars from Jalandhar. I mean, all that happened. Yes. But then the moment COVID, whether it went away or not, but we went back to our old ways, we're back to square one. Yes. We should have taken some leap out of that COVID experience. True. And I think, you see, the political leadership and the bureaucracy likes to talk. Implementation is where we all fail. Yes. Laws exist for everything, but when you look the other way, laws will be broken.
Yes, yes, yes. And there's an old saying, if there's a law, it will be broken. If there's an agreement, it will also be broken. Yeah. But you have to enforce it Mhm. and give a punitive uh, cost to it so that people are aware that if they default, they will pay a very heavy price. Yes. And it shouldn't be that my uncle is in so-and-so party, therefore I will not be punished. Yes. Yes, yes, very right, sir. Very right. Yes. Yes. So, how many months he was there? In a year, or I'm you were coming back on the 15th. I'll actually be landing in Delhi on the 14th afternoon. So I've given everybody a date of 15 because you do require some time to recover. Yes, yes. So Okay. effectively 17th onwards, let's put it that way, So, that one. how much time you are in India and how much time with your children? No, Yes. I spend most of my time in India. Okay. It's just that we were here for about 6 weeks. So, Okay. 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 Hanji. So back in India, who are there, sir? You only and your maybe ma'am is there? So my Oh, wife is with me. okay. Yeah, So she's a both of teacher. you. So yeah, both of us. Okay. Hanji. She's teaching in DPS Sushant Lok. Okay. So she has to be back because schools have opened up and she's had Uh-huh. some extra leave. So, Okay. Yes. so that's how it is. So Great, sir. we'll, I think, connect once I'm back and Mm. we'll follow up. Sure, sure, sir. So, would you like to tell a bit about myself, what I do and all? Hanji, definitely. I'd been very interesting to hear that. Yes. So, I have worked in a company called Basics. So I started my career as a data analyst, you know, Okay. and then in that profile, I became a social researcher. So social data jitna bhi aata health related mostly. So that was analyzed by me. And after that, I transitioned into implementation, I will say. So that will be a different story. I'll talk about that afterwards. But I could see that with a little effort, if you have dedication, a lot can be achieved. So 70 साल से भुखमरी नहीं गई. You must be hearing that every time and again, right? But Right. 4 साल की मेहनत लगी मुझे एक पॉकेट में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, आपने अगर सुना हो, so we could make that area food sufficient within 4 years of time. Not only that, we mobilized ladies to be leaders, illiterate ladies. So मैं जब पहले गई थी तो घूंघट करती थी. Within 4 years of time, they became members of the district governing board under the under the guidance of the collector. They won 17 awards. One from Narendra Modi himself. He was the then Chief Minister of Gujarat. So there was a farmer convention. They attended and they won the award. ये उन लोगों ने जीता. मैं अपने बारे में नहीं बताती. And then they also formed a association, SHG, federation, and they had a corpus of 36 lakhs rupees within a. It was of course a project. From that project, we mobilized the money into their bank account, the SSG bank account, so that they can take money at a very low interest and then pay back. That way, they will become sustainable. So, the point of this experience, and I want to point out is that it can be achieved no matter what. Right. Whatever is the circumstances, it can be achieved provided somebody is willing to dedicate his or her time there with the people. Because क्या होता है, फार्मर इतने सालों से, हजारों सालों से वो जुआ ही खेल रहे हैं क्लाइमेट के साथ. कभी होता है, कभी नहीं होता है. तो उनका एक इंट्यूशन डेवलप होता है कि the amount of money they will invest, whether they will get it back. अगर नहीं अगर मिलता है तो then they do not take any action. मान लीजिए कीड़ा लग गया. So the action point for us
is to spray some pesticide or something, take some measure. तो उसमें जितना पैसा खर्च होगा, अगर वो क्रॉप उसके बाद जो आता है उतना पैसा नहीं देने वाला है, देन दे डोंट स्प्रे एनी पेस्टिसाइड, कुछ भी एक्शन नहीं लेते, गया तो गया. सो इट इज लाइक दैट. तो ये खाली सर्वाइवल मोड था. तो बट व्हेन आई सेंस्ड दैट, I was living with them inside the forest. It was a tiger reserve ना. So I was living with that. That is required. क्योंकि वो कब एक्शन नहीं लेने वाले हैं, just becoming passive. If you can sense that, you can tell them to take action. फिर उनको आप समझा दीजिए कि कैसे होगा क्या हो. So if you do that for 4 seasons, they will train themselves. क्योंकि किसी ने उनको बताया नहीं ना कि करना क्या है. हाँ तो जी. और केवीके के साइंटिस्ट को मैंने पूछा कि आके थोड़ा ट्रेनिंग दे दीजिए. बोले कि मैडम आप बहुत जंगल में घुस के काम करती हो, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो देयर, आप उनको ब्लॉक में ले आओ. जो लेडी घर से नहीं निकली, गांव से नहीं निकली अपनी, उसको मैं ब्लॉक में कैसे ले आती उस स्टेज में. बट 4 years लेटर वो आके मुझे बोलते थे हम जाके ट्रेनिंग दे दें. मैं बोली कि अभी आपकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं से सीख के मैंने तो दे दिया. एंड दे आर हैप्पी विथ इट. और जो भी सीखना है वो सीख जाए अपना एक्सपेरिमेंट करके, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करना सीख गए. सो दिस इज ए कैरेक्टर बिल्डिंग. उनका हैबिट चेंज हुआ. सो दिस इज पॉसिबल. अगर एक प्लेस में हो सकता है तो दूसरे प्लेस में, तीसरे प्लेस में कोई भी कर सकता है. कुछ मैजिक वेजिक तो मेरे पास था नहीं, बस इतना ही था जो मैं बता रही हूँ. तो यही सर सिखाने के लिए मैं हूँ. तो शुरू कहाँ से करें? शुरू आपको अपना काम पसंद आना चाहिए. अगर आपको अपना काम पसंद नहीं आता तो आप हमेशा क्रीपिंग एंड कंप्लेनिंग करोगे. आप जैसे बता रहे थे, इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय ए बस और ट्रेन इन इंडिया, देन पीपल विल बी लाइक जोर जोर से कोई बात कर रहे हैं. क्या होगा उस बात को अगर आप गौर से सुनेंगे, पॉलिटिक्स ही होती है बात. कौन सी पॉलिटिक्स? देश की पॉलिटिक्स, नहीं तो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स. और बॉस को कंप्लेन कर रहे होते हैं. बॉस की कंप्लेन किसी अनजाने आदमी से कर रहे होते हैं. कुछ फायदा तो होता नहीं. अगर 2 दिन अगर ट्रेन में कोई ट्रैवल कर रहा है तो 2 ही दिन पूरा का पूरा वो इस ऑडियंस से उस ऑडियंस से सबके साथ वही कंप्लेनिंग क्रीविंग करता है. एंड इट गोज ऑन एवरीवेयर. तो मैं सोची कि इतना एनर्जी जो वेस्ट होता है, कैन अगर वो सॉल्यूशन की तरफ एक बार आंख उठा के देखें, बिकॉज दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स ब्लाइंडेड बाय हेट्रेड ना, कंप्लेन. किसी ने कोई गलती कर दी या फिर आपका परसेप्शन है कि किसी ने गलती की, देन आप कंप्लेन करने में लग गए. सोल्यूशन ढूंढने में तो लगे नहीं. जब ढूंढे नहीं तो मिलेगा कहाँ? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच कि भाई पहले जो भी काम करते हो, छोटा करते हो, बड़ा करते हो, पता नहीं आप अपने काम को कितना बड़ा समझते हो, कितना इंपॉर्टेंट समझते हो, वो भी एक इशू है. लेकिन आप अगर वो काम नहीं करोगे तो वो काम चलेगा कैसे? बिकॉज यू आर देयर टू डू दैट वर्क. तो द फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने काम को प्यार करना सीखो. तो उसके लिए सर होल लॉट ऑफ हैबिट चेंज इज रिक्वायर्ड. क्योंकि अब तक तो किसी ने बताया नहीं. मैं किसी से भी बोलती हूँ, बॉस से झगड़ा किए बिना भी आप अपना रास्ता चुन सकते हो, ग्रोथ करवा सकते हो. देन वो बोलते हैं कि क्या बॉस की तेल मालिश करें, राइट? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी यही बोलते हैं. तो आई डिडंट डू एनी ऑफ दैट. तो फिर मैंने कैसे किया? तो आप भी वही कर सकते हो. और ऐसा नहीं है कि मैं किसी जमाने में कंप्लेनिंग क्रीविंग नहीं करती थी. आई यूज्ड टू डू ए लॉट. तो किसी दिन मुझे पता चला कि इससे भी मजेदार कोई बात है. जब आप एक चैलेंज को लेते हो एंड देन यू प्रूव कि आप कर सकते हो, आप जिंदगी में कभी पलट के कंप्लेनिंग क्रीविंग तो नहीं करोगे. तो व्हाई डोंट यू चूज दैट चैलेंज, वट एवर इट इज. आपके कहीं पे भी चैलेंज तो भरा पड़ा है ना जिंदगी में, कोई भी ले लो एंड प्रूव करो कि यू आर राइट. बस उतना ही कर दो, अपने काम में ही कर दो. So you can start with that, and for everybody the challenge will be very different. The way to decide which challenge to take will be different because your background is different. तो वो कर दो. बात तो ले दे के काम पे ही अटकती है, सबके लाइवलीहुड पे आती है, फिर आपके ग्रोथ पे आती है. सबका वही कॉमन पैरामीटर है
और सब्जेक्ट बस डिफरेंट. So that is what I start with. So I call myself a joyful excellence coach. और यही सिखाती हूँ सर. और इसमें कई सारी चीजें हैं कि आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सी चुनना है और किस पे काम करना है. वो आपसे बात करके मुझे पता चल जाएगी कि आपको काम करते हैं कौन सा अच्छा लगा. वो तो कोई भी पता कर सकता है, बट उसी पे आपको एक रोड मैप नहीं मिलता कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या. तो रोड मैप देती हूँ. तो इन शॉर्ट, दिस इज द थिंग. It is somebody very interesting. I think you've done a phenomenal job in Bandhavgarh, and I think you're clear in your thought process of what you want to do. yes, yes, And I think that's really important yeah, because most people, I think, are not clear in the thought process of what they really want to do. yes, And yes, they keep changing, their interest or their work to हाँ, see that where they'll probably get. In our world today, I think it's more money, to be very precise. yes, sir. And they're not looking at overall contentment. So Yes. I think the difference lies in whether you are contented or you're still greedy. Yeah, yes, sir. So that So, greed also will be okay. अगर आप बहुत ambitious होते हैं, like you have to have your integrity also, क्योंकि fulfillment फिर नहीं आएगा ना. greedy होके बहुत सारे लोग यहाँ पे करोड़पति भी है. टोनी रॉबिन्स बताते हैं, जो वर्ल्ड फेमस टीचर हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं. His students are billionaires. 85% of his students are millionaires. But he says they don't find fulfillment. They still come to him, asking ki where to get this. And today I was listening to somebody, he was telling after some time, money is not the crux of the thing. Money आता है. You won't love money after some time. रतन टाटा क्या सुबह उठ के मनी के बारे में सोचते हैं? नारायण मूर्ति जी मनी के बारे में सोचते हैं? नहीं. दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स. व्हाट इज दैट? तो क्या हम वैसा कुछ कर सकते हैं? लोग बोलेंगे अभी नहीं करने के लिए तो एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं. बोलेंगे वो बिलियनियर है ऑलरेडी, इसलिए वो नहीं सोचे भी तो चलता है. हम क्यों नहीं सोचे, हम तो ऑर्डिनरी है. तो इट इज योर चॉइस. आपको फुलफिलमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए. आपको कोई लिगेसी दे के जाना है किसी अपने आगे वाले जनरेशन को, या फिर नहीं. आप किस तरह से रिमेम्बर होंगे, राइट? तो ये interesting, वो जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि आपका पेट भर सकता है पर नियत नहीं भर सकती. हाँ, वो हाँ, नियत की बात जहाँ पे होती है ना सर, दैट इज ए आपके बैकग्राउंड से कैसे आया है, पर मतलब आपके आगे क्या है, आपको मिलेगा तो वही ना फुलफिलमेंट, या फिर आप नियत भरो. दोनों इकट्ठा होगा ही नहीं. बिल्कुल. तो आप चॉइस चूज कर लो कि कौन सा चाहिए. जब आप जाओगे इस दुनिया से, आपका करोड़, पता नहीं कौन आपको याद करेगा आपके करोड़ के लिए, या फिर याद करेगा आपने उसके लिए क्या किया. तो और फिर आप कैसे खुद से मैनेज करोगे. 1 करोड़ आज अगर आप लाखों में कमाते हैं और कल को आप करोड़ों में कमाने लगे, खाएंगे तो उतना ही, पहनेंगे तो उतना ही, कुछ बिल्कुल. रहेंगे, कुछ स्टेटस बदल जाएगा, ठीक है, बट हाउ विल दैट हेल्प, दैट दैट विल नरिश योर सोल, वो भी तो सोचिए. तो मैं भी, लोग नहीं सोचते बिकॉज दे आर एट द सर्वाइवल लेवल, और थोड़ा सा ऊपर उसमें से है, रिकॉग्निशन लेवल शायद बहुत ऊपर है उनके लिए, तो उनको ब्लेम भी नहीं करती. बट कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना होगा, हाउ टू बिकम बेटर देन व्हाट वी आर टुडे. तो वही है सर. To hear this from you. थैंक यू. तो सर So मेरे आपसे, where are you in Delhi? सर दिल्ली में आई एम एट मयूर विहार पॉकेट 1, Okay. ईस्ट दिल्ली. वेयर आर यू सर, वेयर डू यू स्टे? I stay in Gurgaon. ओके. So, and so I stay next to the Huda metro station. That's ओह, अच्छा अच्छा, ओके. and
that मेट्रो part of it. स्टेशन से उतरो और आपके घर चले जाओ, यही। हाँ जी, हाँ जी. It's Great. about 15-minute walk. Okay. So that's the best thing to do. Okay. मैं वैसे आप बोल रहे थे कि चलने नहीं होता, मैं रोज सरोजनी से उतर के, मेरा ऑफिस सफदरजंग एनक्लेव है, अच्छा तो जी. मेट्रो स्टेशन से उतर के चलती हूँ अपने ऑफिस और फिर वापस भी वॉकिंग करते हुए आती हूँ। और आपने जैसे बोला ना कि फुटपाथ तो पूरा भरा रहता है, उधर थोड़ा सा खाली है, लेकिन किसी ने पार्क कर दिया था, मतलब एक जहाँ पे बहुत भीड़ लगती है ना, वहाँ पे मैं एम्स के सामने, जस्ट सामने थोड़ा सा इधर आगे, हाँ जी. वहां पे आपको फुटपाथ चाहिए, क्योंकि भीड़ है। आप उधर जाओगे तो कोई आ जा रहा है, तो वहां पे ही किसी ने पार्किंग, मतलब पार्किंग दिया हुआ है, तो कार कोई खड़ी है ऐसे कि आप उधर से निकल नहीं सकते। दो चार बार मैंने झगड़ा भी किया कि ये भाई आपने पार्किंग दी है तो थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा अगर कर देंगे तो हम निकल जाएंगे ना इधर से, फुटपाथ तो इसीलिए है, बना है, आपके पार्किंग के लिए नहीं बना। तो देन मैंने कहा आप थोड़ा सा खींच के चले जाओ ना, बोले चली ही जाती हूँ, बट कभी कभी कीचड़ हो जाता है उधर, तो आपको फुटपाथ चाहिए, ये इसीलिए बना है। तो देन थोड़ा बहुत करते हैं, फिर आज देखा कि कोई बंदा बड़ी सी गाड़ी लेके उसको टेढ़ा करके रखा है ना, आप इधर से जा सकते हैं ना उधर से जा सकते हैं। मैं बोला थोड़ा गाड़ी को आप एडजस्ट करके रख सकते हो ना, ताकि हम भी चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो मेरे से उल्टा लड़ाई करने लगे कि मैम सभी कोई तो जाते हैं, आपको क्या दिक्कत है। मैं बोली चलो मैं भी चली जाती हूँ, तो इससे क्या क्या होगा, ये कंप्लेन कर दूं फिर मैं किसी को, ऐसे यही चलेगा। या फिर आप खुद से गाड़ी को ठीक से नहीं रख सकते, थोड़ा सा सीधा ही करना है, थोड़ा सा आगे लेके जाना, हम्म. यही है सर। सर एक्चुअली क्या है कि बात तो हम कर लेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे मिड करियर प्रोफेशनल एक्चुअली फंस जाते हैं सर क्रॉस रोड पे, क्योंकि पीछे अब स्पॉइल करके अपना लाइफ चले जाते हैं 30, 35, 37, 45 तक, एंड देन उनको सडनली समझ में आता है कि कुछ नहीं किया, व्हाट टू डू। तो पीछे का तो कुछ नहीं कर सकते, आगे का, बट आगे का उनको डायरेक्शन देने के लिए नहीं है कोई। तो पहले हमारी सोसाइटी होती थी जहाँ पे बड़े होते थे जो काउंसलिंग थोड़ा सा कर देते थे, बट ये जनरेशन ही इतना आगे बढ़ गया कि वो भी अपना कुछ एडवाइस देने देंगे तो फिर कोई लेगा नहीं, लेते भी नहीं, तो दे डोंट ट्रस्ट एनीबडी। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि कोई ऐसा है उसी रेंज में सर, 25 to 30, 45 रेंज, तो आप उनको मेरा ईमेल या फिर कुछ भी जो भी मिल रहा है आपको, जो भी आप अप्रोप्रिएट समझें, उनको पास ऑन कर दें, ताकि वो मेरे किसी शो में आ जाए, एंड देन वी कैन टॉक, एंड इफ आई कैन हेल्प देन आई आई वुड लाइक टू हेल्प। Yeah. You share your details with me. क्योंकि आपने मेरे ख्याल जो दिया था that was a different platform, I think. I got onto it yesterday. एक LinkedIn पे आपने भेजा था, that was actually different plan. Trying to figure out करना है. सर मैंने शायद आपको कैलेंडरली लिंक दिया होगा, हाँ, क्या दिया, कैलेंडर लेके आ गया. कैलेंडरली लिंक सर वो है कि आप बुक करें कॉल, मेरे साथ बात करेंगे, क्योंकि आपका टाइम मेरा टाइम मुझे अच्छा, पता नहीं। okay. I did not know about this app, so I will probably learn about it and use that more इट इज effectively. जस्ट ए कैलेंडर सर। अभी अच्छा, बताइए कि अच्छा. आप बोल रहे हैं कि 7 बजे मिलते हैं, मेरा टाइम नहीं है, फिर आप बोलेंगे 7:30 बजे मिल लें, फिर पता नहीं क्या है। तो Okay. क्या है कि वहां पे मैंने इंडिकेट करके रखा हुआ है कि ये टाइम में मैं अवेलेबल हूँ, अभी आपको जो स्लॉट पसंद आए आप उसको क्लिक करके बुक कर लें, तो एक लिंक आपके पास भी जाती है, मेरे पास भी आ जाती है। ठीक है. नहीं, एक्चुअली आपने पहले भेजा, then somebody else also sent me this link on another thing that I'm doing. हम्म। So I said, wow, this seems to be something new, so I need to find out more about it. यस, कैलेंडर So लिंक इज अ सिंपल थिंग, इट हाँ इज जी, नहीं, I जस्ट understand it's a very
fair one because it allows everybody to be together at a mutually convenient time. नॉट टुगेदर सर, ये 1-to-1 के लिए होता है. Honey, what I'm saying that even either way, I have to speak to somebody. If I say, okay, this please connect on this, it becomes easier. Yes, yes, very easy. हाँ, sir. हाँ, बिल्कुल तो उसमें क्या होता है कि पहले मैंने जब बोला था तो फिर लोग बोलते थे कि बहुत ही फॉर्मल हो रही है. इट इज नॉट लाइक फॉर्मल. आप बुक करो. नहीं, हाँ बिल्कुल. हाँ, so that is one. And the second thing is I have a YouTube channel, sir. रोज कोई ना कोई वीडियो मेरा अपलोड हो जाता है. One can refer to that. And ऐसे अगर आएंगे तो देन वो तो बहुत ही जेनरिक होता है ना. यूट्यूब वीडियो जो होता है, जो मैंने आपको बताया, वो जेनरिक है. किसी पर्टिकुलर पर्सन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता उससे. दे नीड टू गो थ्रू ए ट्रेनिंग. तो वो ट्रेनिंग कोर्स मैंने अलग से रखा है. एक है प्लेटफॉर्म जिसमें रखा है. वो लेवल 1 है. लेवल 2 का मैं बना रही हूँ अभी, तो धीरे धीरे अपलोड होगा. एंड देन लेवल 3 जहाँ पे 1-to-1 बैठ के ही प्रॉब्लम, वो बहुत ही छोटा टाइम होता है, जैसे 6 से 7 क्लास होता है, और पूरा बैठ के उनका प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देना. उसमें नो गेसिंग वर्क चलेगा. बाकी सारा हैबिट चेंज होता है. हैबिट चेंज का तो सर बहुत टाइम लगता ही है. सो और सभी कोई एग्री भी नहीं करेंगे, बहुत रेजिस्ट करेंगे, फिर करेंगे. बट आई कैन से कि दीज आर द 20 और 30 थिंग्स आपको करना है. आप करो चाहे ना करो, जितना करोगे उतना चेंज. मैंने किया है जो वही बताऊंगी, मैं किसी और का लूंगी नहीं. तो इट विल बी लाइक दैट. और जो L1 में बोल रहे हैं सर, it is not for a course, it is to enter into the community for lifetime. I have a group जहाँ पे बंदा, जैसे अपनी फैमिली होती है ना, वैसी ही फैमिली है वो, जहाँ पे कभी भी वो क्वेश्चन करे, एक ही बार पे करके एंट्री करेंगे. एंड देन दे विल बी देयर फॉर लाइफ टाइम. कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे लोग हैं आंसर करने के लिए. तो जो आंसर उसको अच्छा लगे वो ले सकता है. सो इट इज ए मास्टर माइंड काइंड ऑफ थिंग, आप बोल सकते हैं. एंड सेकेंड लेवल पे स्किल बिल्डिंग होता है, जहाँ पे भी आप अटक गए हो. कोई किसी को तो ईमेल लिखना नहीं आता, तो ईमेल कैसे लिखते हैं वो सीखेगा. किसी को रिज्यूमे अपना बनाना नहीं आता, सीखेगा. KRA अपना क्या है नहीं पता किसी को, तो वो कैसे बनाए. KRA के अनुसार आप कैसे अपने खुद को रेडी कर सकते हैं अप्रेजल के लिए, वो है. कैसे डेली इवेलुएट करेंगे, वो है. टाइम मैनेजमेंट नहीं है आपका, कैसे कर सकते हैं आप अपने स्टाइल से, वो है. कंसिस्टेंसी का तो 90% लोगों को इश्यू है, तो कैसे कर सकते हैं. एंड फिर अपनी पर्सनालिटी को भी देखो, जो आप वट एवर यू आर बोर्न विथ, अपने पर्सनालिटी में एप्टीट्यूड है, बिहेवियर है, हैबिट्स है, और एक्शंस है, परसेप्शन भी है. आपका परसेप्शन आपके साथ खेल खेल लेता है. सो दैट परसेप्शन नीड्स टू बी चेंज. आप उसको हमेशा कैसे चेंज कर सकते हैं. सो दैट इज ए प्रैक्टिस ना. रोज कैसे कोई कुछ भी नेगेटिव हुआ तो उसको आप पॉजिटिव स्टोरी में कैसे चेंज करोगे, हाउ यू कैन डू. सो हैंड होल्डिंग होना चाहिए, वरना फंसते भी हैं. मतलब खुद से आप करने लगे, कभी किया नहीं, तो फिर बहुत सारा उबड़ खाबड़ है. सो पॉसिबिलिटीज कैसे उसको नेविगेट करें, इट्स लाइक दैट. तो ऐसे करके मैंने 30 बनाया है. वैसे तो है 90, पर जिसको जैसे चाहिए. Very nice. Thank you, sir. So I think I'll connect with you in about a week's time once I'm back. Sure. ठीक है जी. अच्छा जी. ठीक है सर. थैंक यू सो मच. चलो जी. थैंक यू जी. नमस्कार. थैंक यू सर. नमस्ते.